Good morning. I, Sushma Madan from the SD Vidya School, is welcoming you all to the home mentoring session of business study. In this video, we will cover the functions and the meaning of stock exchange. In the last video, we have done the different type of markets. Financial market, that was capital market. In the capital market, we have categorized that market into two parts. One is the primary market and another is the secondary market, and stock exchange comes under the secondary market. Now why we call it as a secondary market? Kyun? Because in this market fresh securities are not sold. Only those security or shares or debentures are dealt which have been sold previously by the company. And when the company sell those security, that comes under the primary market. For example, one person needs security. If they buy that security directly from the company, if they buy shares or debentures directly from the company, then it comes under the primary market. Due to that, we call it as a new issue market. But when that person needs money, now he has bought the shares, now he needs money, where he will go? He will find another investor. And how he can sell the share? He can sell that share through the stock exchange. Stock exchange क्या होती है? Where they have the registered broker. So it is a very important, stock exchange has a very important role in any country's economy. Because in the stock exchange, the prices of shares decided. Because they have both the forces, demand as well as supply forces. If the prices of shares goes up, then economy goes up. अगर मार्केट प्राइस शेयर का अप आता है, कंपनी के प्राइस का शेयर, कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, इट मींस कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, कंपनी की गुडविल अच्छी है, अपने शेयर होल्डर्स को वो मार्केट ज्यादा डिविडेंड दे रही है, ड्यू टू दैट द शेयर प्राइस इज गोइंग अप. अगर पूरी कंट्री की हमने कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट द शेयर्स प्राइस और द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी थ्रू द सेंसेक्स. अब सेंसेक्स कहां से आता है? इट कम्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स डिसाइड करता है. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंसेक्स? ऑल ओवर द कंट्री आपके शेयर्स जो बिकते हैं या खरीदे जाते हैं, ये थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होता है, रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसको कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है थ्रू द सेबी. अब वहां पर सारी कंट्री के जितने एक दिन में शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं, वो प्राइस फिक्स हो जाता है. अब उस प्राइस में क्या प्राइस कितनी ज्यादा कंपनी के, उसमें कैसे सेंसेक्स कैसे डिसाइड होता है? व्हाट दे डू फॉर वन डे, व्हाट दे डू, दे टेक द अपर लिमिट ऑफ 30 कंपनीज की, 30 कंपनीज के जिसके ज्यादा ट्रेडिंग हुई है उनके नेम ले लिए. नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दोज शेयर? दैट इज एडेड. तो वो क्या बन जाता है? सेंसेक्स बन जाता है. तो अगर उनके प्राइजेस अप गए तो इट मींस मार्केट अप गई, और अगर प्राइजेस डाउन गए तो मार्केट डाउन गई. ड्यू टू दैट वी call कि सेंसेक्स tells the is a economic barometer of any company, कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कहां जा रही है. So now we come to the meaning of stock exchange. According to the SEBI Act 1956, stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in security. This was the terminology of stock exchange. आप ये वाला definition is given in NCERT. आप ये वाला definition भी कर सकते हैं. You can do this easy definition also. Stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing security. ये एक institution है which provides the platform. Now we come to the functions of stock exchange. First function is providing liquidity and marketability to existing securities.
The basic function of a stock exchange is to create the continuous market where securities are bought and sold. एक मार्केट क्रिएट करना कि जब मर्जी आपका मन हो सिक्योरिटी बाय करने का, सेल करने का, इट कैन बी सोल्ड. जब हम सिक्योरिटी सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश आता है. ड्यू टू दैट वी कॉल इट एज लिक्विडिटी. और जब हमें सिक्योरिटी, हमें कैश को इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबिलिटी. सेकेंड फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. आई हैव टोल्ड यू कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के कैसे फिक्स होते हैं, विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड इन द स्टॉक एक्सचेंज देयर आर investors also, there are sellers of security also. If the sellers are more, buyers are less, prices will go down. If the sellers are less, buyers are more, prices will go up. Stock exchange, third function, stock exchange also provide the safety of transactions. The membership of stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. एक proper framework बना हुआ है जिसके अंदर जो है stock exchange की dealing को regulate किया जाता है. This ensures that investment of public should be safe and there should be fair dealing in the market. Now we come to the fourth function of stock exchange, contributes to economic growth. कैसे कंट्रीब्यूट करती है? अब मैंने आपको बताया कि स्मॉल सेवर के पास पैसे हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है. और जब स्मॉल सेवर को पैसे की जरूरत है, वो कहाँ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से उसको पैसों को लिक्विड कराएगा एंड दे कैन यूज इट. एंड दैट मनी, इफ दैट मनी इज नॉट यूजिंग एनीवेयर, तो हम उसको प्रोडक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न ऑफ दैट मनी. By investing in the shares, we get the dividend in return of money. So stock exchange contribute to the economic growth. Idle money is used for some productive purpose. Then second is spreading of equity cult, ensures wide share ownership. Stock exchange play a vital role in the ensuring wider share ownership by regulating new issue, better trading practices and taking effective steps in educating the public about the investment. तो spreading equity cult क्या होता है कि ये सेफ्टी इंश्योर करता है, नई कंपनीज को रेगुलेट करता है और इंफॉर्मेशन देता है टू द जनरल पब्लिक कि व्हाट द कंपनीज आर डूइंग. Then the last function is providing scope for speculation. Stock exchange provides sufficient scope within the provision of law for speculative activity in a restricted and controlled environment. Basically, in the stock exchange, what happens? Nothing is done, only investing the money, money is multiplied. So this is a type of a speculation, but this speculation is done in a restricted as well as in a controlled environment. So this was the function of the stock exchange. Now we come to the next topic, how trading is done through stock exchange. If anybody wants to buy the share or sell the share, what procedure is followed? So first step of trading of in the stock exchange is selection of broker. I have told you कि आप directly stock exchange से dealing नहीं कर सकते, we need some registered broker. तो उससे contact करेगा बायर जिसने शेयर्स खरीदने हैं या सेलर हु वांट्स टू सेल द शेयर. आफ्टर दैट प्लेसिंग द ऑर्डर. उसके बाद क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स बताता है ब्रोकर को कि मुझे कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी है, किस टाइप की खरीदनी है और कितना नंबर चाहिए. देन थर्ड, आफ्टर द इंक्वायरी, आफ्टर हिज डिटेल ऑफ द कस्टमर, ब्रोकर क्या करता है, he buys the security according to the requirement of investment. Next, settlement. The last point is settlement. Now settlement क्या होता है कि अगर आपने स्टॉक ब्रोकर ने सिक्योरिटीज को बाय कर दिया या सेल कर दिया, how it is conducted? Mostly it is conducted on cash basis or on carry over basis. Carry over basis क्या होता है कि if one buyer wants to buy one company's security and wants to sell the other company's security, so that money is adjusted, which takes fortnight, 15 days or 1 month.
दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर बेसिस। तो या तो सिक्योरिटी कैश बेसिस पे कर सकते हैं या कैरी ओवर बेसिस में कर सकते हैं। एंड ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग वन अकाउंट आर टू बी सेटल्ड बाय पेमेंट फॉर परचेजिंग एंड बाय डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। वेरी सिंपल कि अगर आप शेयर बाय करते हैं तो यू विल गेट द शेयर सर्टिफिकेट, इफ यू सेल द शेयर यू विल गेट द मनी फॉर दैट। एंड शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ कि that person is having the security. But nowadays the system of share certificate has been changed. Nowadays online system has been done. Account has to be opened by the buyer, जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, which we will do in the next video, कि डीमैट अकाउंट के अंदर जितने शेयर्स परचेज किए होंगे या जितने शेयर्स सेल किए होंगे उसकी पूरी डिटेल एड ऑन हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड process of dematerialization of account. No need of keeping the security in the physical way, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे डर होता है कि या तो फॉर्जरी हो सकती है या कोई चोरी, अगर चोरी होगी और सर्टिफिकेट चला गया, then who is the ownership of those security? So it is not safe. For that, dematerialization of security is done. Nowadays it is compulsory to have a demat account of that person who wants to deal in the security. Next we will do the difference between the capital market and money market. Dear students, we have studied both the market. In the capital market, two types of market, and money market we have done the instrument. So let us discuss the difference. Participant. Capital market में कौन-कौन part लेता है? There may be investors, financial institutions, banks, corporate offices. और मनी मार्केट में आरबीआई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं कैपिटल मार्केट में? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। एंड इन मनी मार्केट यू हैव डन दोज इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ड्यूरेशन इसका मोर देन 1 ईयर होता है और मनी मार्केट इज लेस देन 1 ईयर। हियर हायर रेट ऑफ रिटर्न इज taken because it is invested for a longer period, और यहाँ पे rate of return is less. Capital market is more risky as compared to the money market. The difference is very important in this chapter. So this was all in all about the capital market and money market, stock exchange, functions of stock exchange, as well as the trading procedure of the stock exchange. Thank you very much.